Hey friends, welcome you all to my YouTube channel s.st now, and today we will do the chapter number 2 of political science of class 10th, that is federalism. And I have given some very important objective type questions at the end of this video. Before starting this chapter, we have to go to the chapter number 1, that was power sharing. और वहाँ हमने दो countries की बात की थी and they were Belgium and Sri Lanka. So basically now we will look back what were the consequences there, what step did the government took. Belgium government, to accommodate, because they wanted to accommodate all the people there, they shifted from a unitary form of government to a federal form of government. And you have to remember this point again, one marker, it can come. Belgium shifted from a unitary to a federal form of government, but in Sri Lanka they continue to be of a unitary form of government only. That means all the powers were with the national government only in Sri Lanka. Sri Lanka was an example of unitary form of government, and Belgium is an example of federal form of government. Sri Lanka adopted a policy of majoritarianism. You always have to remember this point that Sri Lanka उन्होंने majority को उन्होंने preference दिया था और बेल्जियम ने प्रेफरेंस दी थी अपनी सारी कम्युनिटीज़ को, डच को, फ्रेंच को, सब लोगों. So basically federalism is a system of government where the government decides to divide its power between the central authority and its various constituent units of the country. In simple terms आपको सिर्फ याद ऐसे रखना है कि जो country अपनी powers को divide करती है, central government, state government etc., that is a federal form of government, और जहाँ सारी की सारी powers रहती हैं सिर्फ और सिर्फ national government के पास, that is a unitary form of government. There are two or more levels of government in the federal form. Federal form का जो government होती है वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा levels हो सकते हैं, लेकिन जो एक यूनिटरी, जैसे कि इसका टर्म बताता है यूनिटरी, यूनिट, दैट मीन्स वन, यूनिटरी में सिर्फ एक ही लेवल रहता है एंड दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, या आप उसको नेशनल गवर्नमेंट बोल सकते हो या आप उसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हो. सो बेसिकली फेडरलिज्म मीन्स वेयर द पावर गेट्स डिवाइडेड बिटवीन टू और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ वी विल डिस्कस सम फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म. तो इसका सबसे पहला फीचर जो हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था, दैट देयर आर two or more levels of government, that is federalism. So that is the first feature of federalism कि इसके दो या दो से ज़्यादा level होते हैं. Next is different tiers of government governs the same citizen. अब if I'll take the example of India, हमारी जो government है, if I'll talk about the central government, if I'll talk about the state government, they are governing us only. सिटीजन्स जो है वो तो सेम ही है, लेकिन जो उनके एरियाज हैं दे आर डिफरेंट. ईच टियर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन ये पावर्स थोड़ी सी डिवाइड हो जाती हैं टैक्सेशन में, लेजिस्लेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में. एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिटन वेयर, कहाँ लिखा है ये कि कहाँ पावर्स किसके पास होंगी, कहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, कहाँ पर ये होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. These things are specified in the constitution. That is the third feature of federalism. Next feature says that the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. अगर कुछ भी पावर आपको कुछ चेंज करना है, it requires the consent of बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आपको दोनों का कंसेंट होना ज़रूरी है. सो दिस इज़ द नेक्स्ट फीचर. एंड द नेक्स्ट फीचर सेज if any dispute arises in between both the levels of the country, then who can interrupt? Yes, the court has the power to interpret the constitution and the powers of different levels of the government. नाउ द नेक्स्ट फीचर से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. अब स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ली, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ली, ये लोग हमें ही गवर्न कर रहे हैं. दे हैव देयर ओन एरियाज, बट फ्रॉम वेयर आर दे गेटिंग ऑल द मनी? दे आर गेटिंग द मनी फ्रॉम अस ओनली. बट द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू दे आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन, दैट दिस टैक्स विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस टैक्स विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट एट्सेट्रा. सो बेसिकली द फेडरल सिस्टम इट हैज़ गॉट टू ऑब्जेक्टिव. इसके दो ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव होता है इसका प्रमोट करना यूनिटी को, दैट इट हैज़ टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री. एंड द सेकेंड सेज कि इसको जितना भी रीजनल डाइवर्सिटी है कंट्री के अंदर उसको एकोमोडेट करना, दैट इज द सेम टाइम इट हैज़ टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी एज वेल. हियर इन पावर शेयरिंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स दे अग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. दे आर डिवाइडिंग देयर पावर्स. द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, they are dividing the powers among themselves. Now friends, we will discuss about
द टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, जो दो रूट होते हैं हम किस तरीके से फेडरलिज्म फॉर्म कर सकते हैं. देयर आर टू रूट्स एंड दे आर द कमिंग टुगेदर एंड द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. एंड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट देम. दिस इज वेरी सिंपल, लेकिन अगर सिर्फ बुक आप पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा. सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कमिंग टुगेदर? कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर मतलब साथ में आना. सो बेसिकली व्हेन द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ में आते हैं एक बड़ी कंट्री को फॉर्म करने के लिए, लेकिन साथ में उन्हें अपनी पावर भी चाहिए, उन्हें अपनी जो आइडेंटिटी है उसे भी रिटेन रखना है, प्लस दे वांट टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी एज वेल, देन वी कॉल इट एज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन. एंड अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज USA. In the coming together federation, the states usually have equal powers. किसी के पास कम या किसी के पास ज़्यादा powers नहीं होती. Usually all the states they have equal powers and are strong as the federal government. जितनी जो उनकी national government होती है basically उतनी ही strong होती है, या कम ज़्यादा नहीं होता. In fact all the states they have got the equal powers. Now we will discuss about the second route, दैट इज द होल्डिंग टुगेदर, पकड़ कर रखना. सो इसका क्या मीनिंग होता है? व्हेन अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन इट्स स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने अपनी जो पावर्स हैं वो उसने डिवाइड की हैं सारी स्टेट्स के पास. किसी स्टेट्स के पास कम पावर्स भी हैं, किसी के पास ज़्यादा पावर्स भी हैं. दैट इज़ द केस ऑफ होल्डिंग टुगेदर. सो दीज टू केसेस वी हैव डिस्कस्ड, coming together and the holding together federation. And here the states they might have the more powers or the less powers also in the holding together. So friends, it is the time for the objective type questions now, and if you can answer all the questions, that means the concepts are clear to your mind. So all the very best. So friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel, that is s.st now. And I have given the link of my previous videos of chapter number 1 power sharing in the description. If you have any doubts, you can please put your questions in the comment box. I will try to answer your questions. If you liked my video, please like, subscribe and share, and all the very best.